Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. Welcome to our first weekly roundup. For those who are new, let me introduce you to what weekly roundup is. मेरा नाम है अब्दुल्ला और मेरे साथ हैं अशर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं कि इस वीकली राउंडअप का मकसद क्या है। इस वीकली राउंडअप का मकसद ये है कि हम स्पेसिफिकली यूएस मार्केट, यूएस फाइनेंशियल मार्केट और स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक मार्केट को हम कवर करेंगे। और इस वीकली राउंडअप के अंदर क्या डिस्कस होता है, क्यों डिस्कस होता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आने वाले जितने भी हफ्तों में हम अपने वीकली राउंडअप्स करें, उनका मकसद आपके सामने क्लियर हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वीकली राउंडअप के अंदर हम उन डेवलपमेंट्स को शेयर और डिस्कस कर रहे होते हैं जो पास्ट वीक के अंदर हुई होती हैं, स्पेसिफिकली इन यूएस। और इनको हम क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्या चीज़ें होती हैं जो हम यूएस मार्केट के अंदर कवर कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो यूएस स्टॉक मार्केट को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो फैक्टर्स जो हैं इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल इन अ सेंस के कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जिस तरह कोविड आ गया, उसकी वजह से स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा मूव किया, या इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो जो है वो अनाउंस होते हैं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट काफ़ी मूव करती है, या कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, या कोई डेवलपमेंट होती है तो उसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी मूव करती हैं। या इसी तरह इंटरनल कंपनीज़ की अपनी जो सिचुएशन होती है, जो उनकी मैनेजमेंट होती है, जिस तरह का वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, इंटरनल कोई भी फैक्टर्स होते हैं जो उन स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे होते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक की प्राइस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड अल्टीमेटली किसी स्टॉक की प्राइस का अफेक्ट होने का मतलब ये कि वो आपके डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए जिस मार्केट के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हों, जिस मार्केट के स्टॉक्स हम खरीद रहे हैं, उसकी उसकी डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने इस राउंड अप जो सेशन है इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हम हर वीक किया करेंगे, और आज जो हम करने लगे हैं वो आज हमारा 3rd वीक ऑफ अगस्त है। हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि हमारे पास जो ऑडियंस होगी उसमें एक मतलब बिगिनर्स भी होंगे, उसमें एडवांस्ड ट्रेडर्स भी होंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर हर टॉपिक को, हर हर स्टोरी को, हर डेवलपमेंट को बहुत आसान तरीके से समझाया जाए, आसान ज़ुबान के अंदर समझाया जाए, ताकि सबको समझ में आ सके। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आती तो आप अपने सवाल हमें इसके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हम उन सवालों को अपने नेक्स्ट राउंडअप के अंदर आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स और स्टोरीज़ को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशर। और अशर हमारे पास हर सेशन में हुआ करेंगे, जो वीकली रिकैप करेंगे। Asher is a chartered financial analyst. He has been in this industry for around 9 years, handling investment banking and asset management. Asher, welcome to the show. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। तो अशर, मैं ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगा। पास्ट वीक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत सारी वजूहत की वजह से। और ज़ाहिर है हम सारी स्टोरीज़ को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो मेजर इवेंट्स थे, जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आईड लाइक यू टू स्टार्ट विद वेयरएवर यू वांट टू स्टार्ट विद। ठीक है, let me start off by saying that obviously this is a disclaimer, and you're more than welcome to actually go through this disclaimer. Please pause at this very moment in time and understand this disclaimer, and so that we can move forward. Obviously, the disclaimer ये है कि no one associated with Desert Fountain is actually registered as a security broker, dealer, or investment advisor under Desert Fountain. And therefore, by viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस वीक बेसिकली लुकिंग एट द न्यूज़, जो पिछले हफ्ते से पहले जो 4 हफ्ते गुजरे थे, उसमें S&P और नैस्डैक ग्लोबल मार्केट्स ने काफ़ी रैली आई, एंड दैट वाज ऑन द बैक ऑफ बेसिकली इन्फ्लेशन डेटा, बिल्ड अप टू द इन्फ्लेशन डेटा। उस पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।
What exactly it was? It was largely positive for the U.S. Equity markets and U.S. economy, or at least taken to be positive. Um, इसमें ये essentially last week हुआ है कि we've had a bit of a basically pullback with S&P and Nasdaq actually coming down uh, after reaching almost the high that it actually made uh, back after COVID. Um, एंड एसेंशली दो तीन चीज़ें थी इसमें लास्ट वीक थोड़ी बहुत एक तो ट्रेडर्स ने आई थिंक सिंपल प्रॉफिट टेकिंग भी की है बट ऑल्सो द फैक्ट कि यूरोप में जो सिचुएशन इज एग्जैक्टली गैस की and the lack of gas supplies and the inflation numbers that are actually coming out. Germany actually posted 37% year over year increase in कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है कि आपका मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं आगे हमको किस प्राइसेस पे क्या कहते हैं आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को हम्म inclusive of what they are actually incurring as cost, obviously. उनकी cost आपकी cost बन जाती है. And essentially that index was up 37% year over year. Maybe last week data है. I think UK के numbers भी double digits में चले गए इस वक्त same index के. US हम्म US stock markets का हुआ ये था कि CPI data आया था which was the consumer price index जो कि consumers की एक basket को track करता है and that actually fell to 8.5% in July from 9.1% in the previous month. The June में 9.1% था, July में 8.5% हुआ, which is still quite high. मैं आगे भी बात करूँगा इस पर. तो essentially इस सब का लिंक मार्केट से ये था कि मार्केट्स ने ये समझा कि चूंकि डेटा सॉफ्ट आएगा एज इन के जो रीडिंग होगी इन्फ्लेशन की वो सॉफ्ट आएगी जो कि आई देयरफॉर जो यूएस फेडरल रिजर्व है जो अपनी इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त इंक्रीज कर रहा है जैसे कि आपको पता होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हम्म दैट ग्लोबल मार्केट्स में भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही हैं तो traders actually saw this as a window of opportunity for the Fed to actually not be so aggressive in hiking interest rates. तो आपको पता है मार्च से फेड बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रही है हम्म 0.25% बेंचमार्क रेट टू आई बिलीव 2.5% राइट नाउ तो क्या कहते हैं अब basically traders are now seeing a 40%, 41% chance that US Federal Reserve will actually hike the rates by 75 basis points. तो उन्होंने बेसिकली जो रेट हाइक्स किए हैं उसमें आपको पता होगा कि इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट्स के दो रेट हाइक्स किए हैं अब तक राइट हम्म एंड एसेंशली अब this basically number the probability है कि they'll go for another 75 basis points is actually 41% compared to 59% chance कि 50 basis points का hike करेंगे सिर्फ right so सही यानी आप ये कह रहे हैं आसान जुबान में आप ये कह रहे हैं कि ये भी और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है right मतलब so जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं exactly 75 basis points and 75 basis points का hike हुआ and let's actually look at that quickly US federal funds rate 1 year okay so ये देख सकते हैं आपके यहाँ जब इन्होंने शुरू किया मैंने मार्च में बताया ना मार्च में 0.25 थी right and then इन्होंने हाइक किया by around क्या कहते हैं 25 basis points then around 75 basis points then another 75 basis points और फिर उन्होंने क्या कहते हैं another 75 basis points से hike किया basically the last rate hike took the effective funds federal funds rate from 1.75% to 2.5% which is a 75 basis points hike तो अब तो ये भी तो बताएं ना कि ये इफेक्टिव फंड फेडरल फंड रेट्स हैं फंड रेट हैं क्या तो एसेंशली ये बेंचमार्क रेट्स होते हैं जो कि फेडरल रिजर्व खुद इस बेसिकली ये रेट ऑफर करती है इस तरह समझ लें कि अगर मैं आपको ये मतलब ये गवर्नमेंट रेट ऑफर कर रही है ऑन सिक्योरिटीज हम्म ठीक है ना कि हम आपको इस रेट पे मतलब मिसाल के तौर पे इस रेट पे सिक्योरिटीज आपसे खरीद लेंगे यानी यू कैन डिपॉजिट योर मनी विद अस एट दिस रेट तो जाहिर सी बात है अगर वो आगे आपको लेंड करेंगे तो उससे ज्यादा ही क्या लेंड करेंगे ना
तो द आइडिया हम्म। इज कि इट्स अ बेंचमार्क कि मिनिमम रेट सेट हो जाता है, और अब जो इससे इससे ऊपर की ही कहानी होगी जितनी भी आगे लैंडिंग होगी बेसिकली, हम्म। राइट। तो जब तक रेट्स नीचे थे तो आगे की लैंडिंग भी कम पे ही थी। अब रेट्स हम्म। बढ़ चुके हैं तो बेंचमार्क रेट्स, जिसे कहते हैं बेंचमार्क रेट्स बढ़ चुके हैं, तो देयरफॉर या रेफरेंस रेट बढ़ चुका है, तो देयरफॉर जो आगे की लैंडिंग होगी वो भी हायर रेट्स पे होगी, बैंक्स हायर रेट्स पे करेंगे, वरना तो लाकर यहाँ पे डिपॉजिट कर दें अपना पैसा। तो सही है। so this basically leads to speculation on the fact कि यार अगर रेट्स ऊपर जाने शुरू हो गए तो मार्केट्स, ऐसी बात है, lending expensive, यानी borrowing to borrow actually money to invest in your business and what not, which is a key part of the US economy and global economy, तो कर्जा लेना मुश्किल हो जाएगा या कर्जे की अदायगी करना मुश्किल हो जाएगा, चूंकि उस पर जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा वो अच्छा खासा भरना पड़ेगा। So essentially what you have is a situation where जहाँ पे फेडरल रिजर्व ये चाहती है कि इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, जो कि इन्फ्लेशन इज बेसिकली रेड हॉट एट 8.5%, भी अच्छा खासा है। व्हाट दे ट्राइंग टू हम्म। डू इज दैट इससे पहले कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोगों के लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल हो जाए एंड इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ एक मार्केट रिसेशन में चली जाए, डीप रिसेशन हम्म। में चली जाए, आप उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग अप्रोच लेते हैं, जहां पे आप इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करते हैं, राइट, टू द एक्सटेंट के मार्केट्स खुद ब खुद स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं, राइट। सो यू यू मैन्युफैक्चर अ स्लो डाउन। या साउथ एशियन मार्केट्स में थे, श्रीलंका में आपने देखा, मतलब इन्फ्लेशन इतनी ऊपर चली गई कि लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बन गया ना, बिजनेसेस बंद हो गए, राइट, एंड एक तरह से क्रैश हो गई, मतलब एक मार्केट पूरी क्रैश हो गई। बिकॉज हम्म। ऐसी बात है, अगर रेट्स, अगर आपकी जो मतलब आप कंज्यूम ही ना कर पाए, तो जाहिर सी बात है सामने वाले के पास प्रोड्यूस करने का भी कोई जवाब पैदा नहीं होता है, बिजनेस स्लो डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो उसको टेम करने के लिए, टू मेक श्योर कि भाई इन्फ्लेशन वापस नीचे आ जाए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट का रोल होता है कि भाई, यानी मतलब एक गोल होता है कि इन्फ्लेशन को टेम कम करे से ना, कम। और कम से कम रखे, जाहिर सी बात है, ताकि इट मेक्स इट इजियर फॉर पीपल टू एक्चुअली गो अबाउट परचेजिंग देयर एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज, और वेजेस को तेजी से वेजेस तो बढ़ती नहीं है, जाहिर सी बात है। ये आप मतलब पाकिस्तान में तो इट्स वेरी क्लियर फॉर दोज हु आर फ्रॉम साउथ एशिया, दे अंडरस्टैंड दिस, ये दुनिया भर में तो वेजेस आर वेरी स्टिकी, मतलब आपको तो इन्फ्लेशन तो बढ़ गई, डबल हो गई प्राइसेस, आपकी वेजेस कहाँ बढ़ी, तो उसकी वजह हम्म। से स्लो डाउन आ जाता है। तो उस स्लो डाउन को मिटिगेट करने के लिए सेंट्रल बैंक एसेंशियली इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है, मैन्युफैक्चर करता है एक स्लो डाउन, एंड देयरफॉर दे कॉल इट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ सॉर्ट्स, हम्म। ताकि इन्फ्लेशन थोड़ी टेम हो जाए। अब इसमें होता ये कि अल्टीमेटली यूजुअली जब भी इन्फ्लेशन गई है ऊपर, लास्ट टाइम जब 2008 का क्रैश आया तो उससे पहले यही था कि इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइसेस दोनों ऊपर चली गई थी, और मैं बताता हूँ इसका यानी रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, ये एक बात थी। एक ऑन द अदर एंड एक और बात जो नजर आ रही है वो ये कि चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन आना शुरू हो गया है, right? So a lot of the last week was also getting a lot of reading from China, जिसने अपनी जो दो की lending rates हैं इनके, उन्होंने वो क्या कहते हैं नीचे लेकर आए हैं उसको। So they've actually gone uh, opposite, they've gone ahead and done the opposite of हम्म। what everyone is doing, और उन्होंने essentially रेट्स को नीचे लेकर आए, बिकॉज उनकी मार्केट का जो बेसिकली द डेटा दैट इज कमिंग आउट ऑफ देयर इज दैट काफी स्लो डाउन आ गया है इंडस्ट्रियल हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में भी, और रियल एस्टेट, खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि रियल एस्टेट जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है चाइनीज इकोनॉमी का। तो और कैश भी इंजेक्ट कर रहे हैं टू ट्राई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। तो essentially idea यही है कि this all will help them actually revive the market again. So it seems like it's inevitable कि slow down आ रहा है ऐसा ऐसा। I think जो earnings अभी आई हैं मार्केट में, जो अभी रिलीज हो रही है, मे बी वो pick it up next week, कि हम्म। मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या in terms of earnings। तो earnings report भी कोई अच्छी आई नहीं है। I think the market's earnings for the ones that have already reported are actually down year over year, with the exception of energy। तो एनर्जी ठीक स्टॉक्स है। जो हैं, ऑयल स्टॉक्स जो हैं, उनके अलावा तो अर्निंग्स नीचे ही आई हैं, ठीक राइट। है। तो आप ये कह रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट को। वो इम्पैक्ट करती है इंटरेस्ट रेट्स को, राइट। वो इम्पैक्ट इंटरेस्ट करती रेट। है यूएस फेडरल रिजर्व के एक्शन प्लान को, और सही यूएस है। फेडरल रिजर्व का एक्शन प्लान अल्टीमेटली फीड्स इनटू द
US equity markets, right? Because obviously अगर interest rates बढ़ेंगे तो स्लो डाउन आएगा तो obviously हर मतलब businesses में स्लो डाउन आएगा essentially, सही right? सही। तो थोड़ा बहुत मैं I'll dive in a little bit deep. ये आप इन्फ्लेशन डेटा देख सकते हैं यूएस का essentially 2002 से आप देख सकते हैं कि 2008 का जो क्रैश आया था उससे पहले इन्फ्लेशन 5% नॉर्थ ऑफ 5% चली गई थी, राइट? एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑयल मार्केट्स में काफी रैली आई थी और बेसिकली तेल की प्राइसेस ऊपर चली गई थी व्हेनेवर यूजुअली एनर्जी ग्लोबल इन्फ्लेशन आती है बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ऑयल एसेंशियली ऑयल एंड गैस, ठीक है ना? आपकी फैक्ट्रीज आपकी आपके गुड्स सर्विसेज एवरीथिंग हैज ऑयल और मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो या ऑयल एक्चुअल ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, all your entire infrastructure, global infrastructure, manufacturing hubs are powered by this, right? Powered by energy. आपकी पेट्रोल जो है मतलब गैसोलीन जो है वो आपकी कार्स को फ्यूल करती है, आपकी जो नेचुरल गैस है वो आपकी इंडस्ट्रीज को फ्यूल करती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूल करती है। तो ऑल ऑफ दैट ऑब्वियसली रिक्वायर्स नेचुरल गैस एंड ऑयल एज वेल एज डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। सो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड अगर वो ऑयल ऊपर जाता है तो सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, देयरफॉर इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन जब भी आती है तो फेडरल रिजर्व फिर यहाँ पे जैसे फेडरल रिजर्व ने पिछली मरतबा 2007-2008 में क्या कहते हैं अपनी यानी हाइक की थी इंटरेस्ट रेट्स, एंड देन बेसिकली it had crash high and then it had to obviously bring the interest rates down. Basically all in all after that if you see now what's going on it's worse than what happened 2008. तो बेसिकली इस वक्त इन्फ्लेशन तो बेसिक मैंने बताया ना 8.5% टच कर गई है और पिछली मरतबा जब क्रैश आया था तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ थी जब बड़ा क्रैश आया था कोविड। तो एक वाज इट वाज एन ऑलमोस्ट लाइक अननेचुरल फिनोमेना जो मार्केट से रिलेटेड नहीं था, इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं था, वाज मोर ऑफ अ हेल्थ कंसर्न। बट इधर जो लास्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द रियल सेंस आया वो ये जो आया है उसमें तो आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि अभी इस वक्त काफी ज्यादा है। एंड यू कैन सी कि ये मैंने एक और चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऑन माय स्क्रीन वेयर यू लुक एट द एनर्जी प्राइसेस एंड द लिंकेजेस विद इन्फ्लेशन। जब ये अभी ग्राफ इतना ज्यादा नुमाया नहीं है, जो पर्पल लाइन है बट पर्पल लाइन इज एसेंशियली इन्फ्लेशन एंड द ब्लू लाइन और टर्कोइज लाइन इज द एनर्जी प्राइसेस। अब ये देखते हैं कि जब भी एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाती हैं इन्फ्लेशन भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अभी आप देखें कि एनर्जी प्राइसेस कहाँ चली गई, जो एनर्जी इंडेक्स है इनका वो कहाँ चला गया है और ईयर ओवर ईयर इंक्रीज कितना हो गया है, एंड यू सी इन्फ्लेशन वेयर इट इज एज वेल। तो ऑब्वियसली ये भी एक लोगों को ऑलरेडी एक माइंड बना हुआ है कि इसकी वजह से अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर रही तो ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन आना इनएविटेबल है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होगी, राइट, दैट इट्स गोना स्लो एवरीथिंग डाउन। तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अभी वैसे भी इन जनरल जो है वो मार्केट जो है काफ़ी डाउन है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी और ज़्यादा एक मार्केट को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो और नीचे आएगी? मतलब आई वुड से आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन इन द सेंस के इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए इतना कहना जरूरी है कि इट सीम्स अ लिटिल बिट ओवरस्ट्रेच, मीनिंग के मार्केट्स को ज्यादा ही पॉजिटिव मोमेंटम में चल रही हैं, जहां whereas data that is coming out of China, US, स्पेशली यूक्रेन रशिया की जो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी वजह से जो यूरोप में क्राइसिस चल रहा है, डेफिनेटली सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं। आई मीन ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं। ऑफ कोर्स डिमांड इज देयर बट फॉर हाउ लॉन्ग? अगर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा आती है that it eats into the purchasing power of individuals, तो हाउस होल्ड, तो बेसिकली हाउस होल्ड इनकम इन रियल टर्म्स अगर नीचे चली जाती है, जो कि हो रहा है, अगर साउथ एशिया में देखें तो इस वक्त श्रीलंका में देखें तो हो रहा है ना, पाकिस्तान में देखें तो हो रहा है कि लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बनता जा रहा है कि दे कैन इवन अफोर्ड बेसिक आइटम्स, राइट? ठीक है। तो अगर ये होगा तो चीजें स्लो डाउन आएंगी एंड देन मार्केट्स को अल्टीमेटली नीचे जाना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, राइट? बिकॉज बिजनेसेस स्लो डाउन कर देंगे एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट। नेक्स्ट वीक विल प्रॉब्ली पिक दिस अप to a certain extent में यहाँ पे I'll probably hint at this. Another way of looking at the market, क्या market actually है कहाँ? I typically tend to look at the price to earnings ratio, which is essentially the market capitalization of a company, uh, which is the worth of a company, the value of a company, divided by essentially its earnings, right? जो expected earnings in next 12 months की, right? तो एप्पल फॉर एग्जांपल अगर मतलब मिसाल के तौर पे अगर एप्पल so let me just pull up Apple's chart. Apple, yes. So Apple used to be like we're looking at a dollar back in 2000, right?
2000 हम्म, में ये वो यूज्ड टू बी फॉर $1, राइट? इवन 2011 तक आप देखेंगे इट यूज्ड टू बी $3, राइट? हम्म, अब सिचुएशन ये है कि एप्पल हो गया कितना है, $160 का, राइट? हम्म, अब ये आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज एप्पल $1 से $160 का हो गया, दैट मीन्स essentially Apple has become expensive. आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि एप्पल या कोई भी कंपनी हो या S&P हो, मार्केट्स हो इन जनरल, उनकी अर्न यू हैव टू लुक एट द प्राइस रिलेटिव टू द अर्निंग्स, राइट? उनकी अर्निंग्स पावर भी तो बढ़ी है ना। मतलब एप्पल हम्म, अगर $3 पे था उस वक्त, वो लेट से मतलब $2 कमा रहा था, तो आज वो जो क्या कहते हैं मतलब $160 पे वो उससे कहीं ज्यादा कमा रहा है ना एट दिस पॉइंट इन हम्म। टाइम, यानी राइट? आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये देखना हो कि एप्पल अगर आज 160 पर जो है वो ट्रेड हो रहा है, तो क्या 160 जो है इसकी प्राइस ठीक है या नहीं, तो उसका पी रेशो निकालेंगे प्राइस टू Yeah, I अर्निंग्स mean, रेशो। yeah, essentially मुझे I'm just opening this up. So आप यानी Apple को कोई देख लें कोई यहाँ पे। कोई Yeah, I mean, look at the earnings per share. Earnings per share were 8 cents in 2006, right? तब प्राइस थी let's say $2, $3। आज है $6 in the last 12 months, और आज प्राइस 160 है। When you look at the price to earnings here, average annual PE ratio ये देख लें, तो you look at the price to earnings ratio 30 times था, इस वक्त actually 28 times है। हम्म, So you understand, like, it was back in the day it was 30 times, and today is actually 28 times. So in effect, not so much, but it's cheaper right now, हम्म, right? Well, earnings, price to earnings were as low as 13 times or 12 times in 2013. So and then went to 30 times back again. तो price तो ऊपर चली गई है, but earnings भी तो उसके हिसाब से ऊपर गई है ना। And therefore you हम्म। always look at the price to earnings ratio को तो फिर ratio determine करता है कि कोई चीज expensive है कि नहीं है versus its own तो history. फिर क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि 2006 में एप्पल जो जितने पे भी ट्रेड करा था वो बहुत महंगा था? नहीं, देयर इज नो वे टू से दिस पर से अनलेस अनटिल किसी चीज की हिस्ट्री ना हो। आप दो तीन चीजें देख सकते हैं। एक चीज आप ये देख सकते हैं कि यार अच्छा एप्पल कितने पे ट्रेड कर रहा था, फॉर एग्जांपल 30 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था, यानी 30 पीई पे। हम्म, हाँ, तो 30 पीई को आप इस तरह देखेंगे कि यार अच्छा एप्पल के कंपेटिटर्स कौन थे, मतलब फॉर एग्जांपल बैक अच्छा, इन द और डेज उनका तो पे एप्पल, रेशो था। हाँ उनका हम्म, बैक इन द डेज आई डोंट नो उस वक्त आईपॉड वाला टाइम था। एप्पल ने अपना आईफोन कब रिलीज किया है, द फर्स्ट आईफोन दैट इट प्रॉपर्ली लॉन्च्ड, आई एम फॉरगेटिंग द डेट, बट हम्म, उससे पहले या उसके बाद भी जो प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब सैमसंग उसका कंपेटिटर था, आज भी है, राइट? तो you look at the respective industries and you look at who the competitors are, उनका PE ratio क्या है, या इंडस्ट्री का PE ratio क्या है यार, हम्म, या उसका अपना हिस्टोरिकल PE ratio क्या रहा है। तो इधर मैं S&P ठीक। 500 का देख रहा हूँ, which is a ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, आपने सुना ही होगा S&P 500, NASDAQ, ये सारी चीजें सुनी होंगी। मे बी विल डू अ प्राइमर ऑन दिस एट सम पॉइंट इन टाइम के इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। बट सेफ टू से आपने सुना होगा कि मार्केट्स, तो मार्केट जब कहते हैं हम S&P 500, QQQ, which is the NASDAQ, IWM, which is the Russell 2000, तो ये हम इंडेक्सेस देख रहे होते हैं। DJI है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, तो इनको हम देख रहे होते हैं टिपिकली एज अ ब्रॉड, यानी यूएस एक्विटी मार्केट्स और मार्केट्स कहते हैं, तो इनकी इन इंडेक्सेस का एक आप समझ लें मजमुआ ही होता है एक मार्केट्स। सही है। एसेंशली तो एक स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे या नैस्डैक पे, इन किसी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है, मगर these indexes are typically tracking a majority of the large companies. For example, S&P 500 ये सारी एप्पल और सारी कंपनीज को ट्रैक कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल इसका जो पीई रेशियो है, राइट, आप इसको ब्रॉड मार्केट पीई रेशियो समझ लें, वो हिस्टोरिकली 16.6 रहा है, राइट? सो 16.6 हैज बीन द पास्ट 10 ईयर एवरेज पीई। मैंने आपको बताया ना कि हम्म, हिस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं या किसी और चीज से कंपेयर कर लें, कंपेटिटर से। एज अ ब्रॉड मार्केट, एज अ मार्केट कंप्लीटली टोटल, मार्केट का पी रेशियो 16.6 है, और अभी इस वक्त करंट जो फॉरवर्ड पी रेशियो है, यानी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो अगले 12 महीने की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स होंगी एनालिस्ट वॉल स्ट्रीट की तरफ से, एंड एज ऑब्वियसली रेशियो ऑफ इट्स मार्केट कैप, तो वो 18.4 है। What this essentially means that obviously, as you know, the higher the P price to earnings ratio, the more expensive something is, right?
The lower the हम्म price to earnings ratio, the more cheaper it is, right? Again, cheaper, हम्म, expensive or relative terms. मगर इसमें अगर आप हाँ हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो ये 16.6 हिस्टोरिकल रहा है, इस वक्त 18.4 है, which means that S&P currently is actually expensive relatively, not so यस much, but relatively compared to its own history. ये ठीक है. हम्म। And I guess the primers will take care of that. I think we've got some videos on that. Maybe you can plug them in. तो अभी अभी अगर एक यहाँ पर एक सवाल है सर कि अगर अभी 18 पॉइंट समथिंग पर पी रेशो चल रहा है S&P का, तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट 2020 के कौन से महीने में, आई डोंट नो वो मंथ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यानी उस टाइम पी रेशो बहुत ज़्यादा था। ये बेसिकली जब कोविड आया है ना, तो हुआ ये था कि जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस थी ना, अर्निंग्स की हम्म एक्सपेक्टेशन थी वो काफी नीचे गिर गई थी. तो ये बेसिकली हम्म ई जो है ना, द अर्निंग्स, द ई पार्ट एक्चुअली वेंट डाउन हम्म when the quite मतलब तो बेसिकली मार्केट एक्सपेंसिव हो गई थी ना उस वक्त, क्योंकि पीपल वर सेइंग कि यार इस मार्केट वर्सेस दिस मार्केट जो अर्निंग्स आने वाली हैं आगे वो तो बहुत ही बुरी होने वाली है, हम्म राइट. दिस वाज द केस, बट आल्सो ऑब्वियसली मार्केट ने रिबाउंड भी किया था काफी तेजी से, आपको याद होगा हम्म मार्केट ने ऊपर भी काफी गई. एंड आल्सो अर्निंग्स हैव नाउ पिछले एक साल में तो ऊपर आई हैं, राइट, as a result of which the price to earnings ratio has gone down. बट हम्म अब जो कह रहे हैं कि अब ये है स्टोरी के आगे आने वाले जो टाइम है उसमें प्राइस मतलब बेसिकली अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन. नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि मार्केट वॉल स्ट्रीट की एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है क्या अर्निंग्स को ठीक लेकर. बट यू काइंड ऑफ गेट द आइडिया राइट नाउ, राइट, ठीक कि इट्स प्राइस टू अर्निंग्स बेसिकली. एट एनी पॉइंट इन टाइम अर्निंग्स ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकते हैं. अगर नीचे चली गई तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऊपर चला गया, और अर्निंग्स अगर सही, ऊपर चली गई तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नीचे चला गया, नीचे आ जाए। राइट. सो मतलब इन दोनों मतलब एज एनी रेशियो प्राइस भी ऊपर नीचे जा सकती है, अर्निंग्स भी ऊपर नीचे जा सकती है, राइट. ठीक है ठीक है। I think that's pretty much it. I will have a look at basically the uh, S&P, which I've just discussed, which I think is relatively overpriced right now. So as you can see, this is basically me pulling up the monthly chart, right? ये 94 से लेकर 2022 तक का डेटा है मेरे पास अभी फिलहाल. एंड बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ स्टडीज ऑलरेडी की हुई है, मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है विच हैज बिन होल्डिंग एटलीस्ट सिंस ये जो 2008 क्रैश आया था. तो ये एक चैनल है, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड मैंने क्रिएट किए हुए हैं. ये ब्लू लाइन बेसिकली द शेडेड एरिया इज द रेंज इन विच मोर और लेस आप देख सकते हैं कि मार्केट हैज फॉलोड थ्रू. सो बेसिकली अगर आप हम्म 2008 से के बाद से क्रैश के बाद से देखें तो मार्केट हैज प्रीटी मच बिन इन दिस रेंज, इस रेंज के अंदर रही है हम्म, ये रेंज. एंड जहां पे मार्केट ये इसने तोड़ा था मार्केट ने बैक इन जनवरी इस रेंज को, वापस मार्केट आ वहां से चुकी है इस वापस आ रेंज, गए। राइट, इस रेंज में. सो वी कैन से कि अगेन दीज आर नॉट बाइंडिंग इन स्टोन और समथिंग, मतलब ये पत्थर पे नहीं है कि ये खिंच गई तो खिंच गई. Things are dynamic, things can change, but this is one way of triangulating around the valuation of S&P. मैंने आपको सबसे पहले तो हम्म फंडामेंटली बता दिया ना कि फंडामेंटली जो है वो तो हम इस बेसिकली इस चार्ट को देख रहे हैं, राइट. एंड देन क्या कहते हैं, टेक्निकली वी आर ट्राइंग टू डू द सेम इन दिस. अच्छा, मैंने कुछ और पॉइंट्स भी बनाए हुए थे which are essentially levels that I feel that are of key मतलब की एरियाज वेयर वी नीड टू लुक एट. ये एक एरिया मैंने रेजिस्टेंस का बनाया हुआ था व्हिच वाज द क्रैश, बेसिकली जब क्रैश हुआ है 2020 का, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था. इसने बैक इन 2020 जब तोड़ा है, नवंबर दिसंबर में ही तोड़ दिया था, एंड देन इट moved higher, or basically these are the levels that I've picked up right now that I feel that are important to look at. 5 year chart देख लेते हैं. If you look at 5 year chart, this is the weekly chart that I'm actually looking at. पहला monthly chart था which I was looking at. Again, these are some of the areas. ये आप देख सकते हैं, ये crash आया था and then it moved ahead. This was the first area of resistance जो आया था, and then basically has been smooth sailing from there on, um, until it reached actually 478. I think the high, if I'm not wrong, was around 479.98, and then उसके बाद से it moved back down. इस वक्त सिचुएशन ये है कि चैनल का जो मिड पॉइंट था वो उसको उसने टच किया एंड देन इट मूव बैक अप.
एट द सेम टाइम ये एक सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ की हुई है 364 पर, वो उसको भी मैं वॉच कर रहा था। ऑब्वियसली दीज वर मेड बिफोर हैंड, जब ये हम्म जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी, एंड अब हम्म मोर और लेस ये उन्हीं लेवल्स पे खेल रही है। So far what we have is essentially रेंज बाउंड। S&P is still range bound, आप देख सकते हैं इसी रेंज में अभी खेल रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इसी रेंज में रहेगी। मार्केट डेटा भी कोई खास इतना को खास चल नहीं रहा। आई थिंक 440 तक ये ऊपर जाएगी। आई थिंक पिछली बार भी हम जब पिछले हफ्ते बैठे थे, वी वर जस्ट लुकिंग एट द मार्केट्स, एंड मैंने आपको पिछली मरतबा ये बताया था कि आई वाज लुकिंग एट 440 इश एज अ लेवल 440। फॉर, हाँ 440 इश एज अ लेवल। तो अभी तक तो वो इट्स बीइंग रिस्पेक्टेड। इनफैक्ट उससे नीचे ही मार्केट ने हाई जो पिछले हफ्ते लगाया है वो 431.73 का था, 432 का था, एंड 440 भी हम्म रीच नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया था 435 440 में, 430 440 में देख रहा हूँ। तो मुझे अभी हम्म फिलहाल तो आई स्टिल स्टिक विद माय कन्विक्शन के आई डोंट सी एनी रीजन कि मार्केट्स ऊपर जाएंगी इधर से। इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर इट टू गो। I mean, obviously, another way to look at some things, may or matlab, we go into a little bit deeper and we actually look at the. So let's actually look at the daily chart for the past 1 year. So for the past 1 year, if I can quickly तो डू अ वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल मैं टिपिकली इसलिए देखता हूँ चूंकि इट्स अभी तक जो मैंने बात की वो प्राइस रिलेटेड थी, राइट? इट वाज ओनली प्राइस हम्म रिलेटेड, बट आई एक्चुअली look at the volume, because volume एक important indicator होता है ये बताने के लिए कि price basically action कहाँ पे focus था, बेसिकली किस पॉइंट पे आकर सबसे ज्यादा खरीदारी और और बिक्री हुई है, right? हम्म Essentially at what price levels, for a given price level, for each price level, यहाँ पे आगे आपको देख सकते हैं कि for each price level in the past 1 year कहाँ पे सेल हुई है, कहाँ पे तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जब हाई बनाया था मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम वाज हियर, एंड देन मार्केट तो आप नीचे ये आई। सर आप ये बता सकते हैं ब्लू और येलो, मतलब इसमें से ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और येलो क्या ब्लू इज रिप्रेजेंट कर रहा बाइंग वॉल्यूम, येलो इज सेलिंग वॉल्यूम। है? हाँ। तो बेसिकली जब सेलिंग ऑर्डर्स एंड बाइंग ऑर्डर्स एसेंशियली, हम्म राइट? तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर कहाँ पे था, बाइंग प्रेशर कहाँ पे था, ये भी आप देख सकते हैं, right? तो हम्म यहाँ पे ऑब्वियसली ये आप देख सकते हैं कि दिस वाज एन एरिया, क्लियरली ये नजर आ रहा है वॉल्यूम प्रोफाइल में, व्हिच वाज एन एरिया ऑफ कॉन्टेस्टेशन जहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, राइट? एंड एज अ हम्म रिजल्ट ऑफ दैट जो मुझे अभी लाइन मिल रही है वो तकरीबन 433 की है। So this is सही। another way of me having to say कि 433 could be a level that is acting as a resistance, right? हम्म For the market. अगर मैं इसको पिछले 6 months में देख लेता हूँ 1 year से नीचे आकर, and I do the same एनालिसिस, तो मुझे उससे भी नीचे की मिलती है एक्टिविटी। तो आई लुक एट 414, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मे बी 411 मैंने ऑलरेडी खींचा हुआ था, आप देख सकते हैं हम्म 412, 412 के आसपास, 412 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकती है, राइट? एंड ऊपर हम्म ये 433 तक जा सकता है। तो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? के 412 पे इसको सपोर्ट मिल जाएगी, एंड ऊपर ये जा सकता है 433, जिस तरह हमने 1 year का चार्ट देख लिया ऊपर आते हुए। अच्छा अशर, इसमें एक चीज़ मेरे ख्याल में समझना ज़रूरी है और यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि ज़ाहिर है ये S&P 500 के जो आप देख रहे हैं तो आप मार्केट का एक ओवरव्यू जो है ना वो या एक जनरल व्यू मिल रहा है आपको मार्केट का। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक उस मार्केट के अंदर उसी तरह परफॉर्म कर रहा हो जिस तरह से S&P परफॉर्म कर Yeah, रही है। of हो courस, सकता है कि of courस। हाँ, हो सकता है कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन कोई स्टॉक ऐसा हो जो जिसने जो बहुत नीचे आ गया हो अपनी ओरिजिनल, यानी उस प्राइस से जो उसकी 1 साल पहले थी। तो लेकिन फिर भी ज़ाहिर है S&P 500 की जो ये चार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट का एक आई ओवरव्यू। थिंक इम्पोर्टेंट ये इसलिए है चूंकि इम्पोर्टेंट ये इसलिए चार्ट चूंकि इट टेल्स यू कि जनरल मार्केट डायरेक्शन क्या है। अब ऑफ हुँ, कोर्स के ऑफ कोर्स इससे आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते, ये मतलब ये नहीं कह सकते कि हर स्टॉक ऊपर ही जाएगा अगर S&P ऊपर जाता है या नैस्डैक ऊपर हाँ, जाता है, या हर स्टॉक हाँ नीचे ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा हो बिकॉज ऑफ एनी गुड न्यूज, जो कि और S&P दैट नीचे आ रही है। स्टॉक वो S&P नीचे आ रही है। हुँ,
ऑयल स्टॉक्स के साथ ये बहुत ज्यादा हुआ कि जब ऑयल मार्केट ऊपर जा रही थी S&P एक्चुअली वाज वेरी शेकी एंड बट ऑयल एनर्जी स्टॉक्स जो थे ठीक है ना एक्सॉन मोबिल एंड द लाइक्स वो ऊपर जा रहे थे वो तो छतें फाड़ रहे थे राइट सो दैट एक्चुअली हैपेंस बट दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर मतलब ट्रेडर्स यूजुअली कहते हैं कि भाई मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे आप यानी ब्रॉड मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ही बाकी चांसेस हैं कि आप भी पैसे बना बिल्कुल। पाएंगे स्टॉक्स में भी राइट हम्म। अगर ब्रॉड मार्केट ही ऊपर नहीं जा रही होगी तो मुश्किल है कि आप भी खुद स्टॉक्स में पैसे बना पाएंगे राइट दैट हम्म। दैट आई गेस मे बी दैट मेक्स सेंस सही। सही। I think we'll call it a wrap this time. Unless until you have any questions, I think it's important to understand that S&P generally is what, yeah, broad markets generally is what a little bit overpriced fundamentally. Technically, be within range, not overpriced. I wouldn't say overpriced, but definitely within range. I don't see a lot of positive action from here. We'll review earnings next week. We'll get a better idea of what happened because कुछ और companies अभी भी announce कर रही थी. I think I saw a couple of announcements yesterday as well when the markets closed Friday. So markets अभी भी they're still announcing, companies are still announcing their earnings. So next week हम earnings देख लेंगे कि मजमूई सूरत हाल है क्या and what are we actually expecting next week. So far, as I said, that any majority of the companies that have actually announced negative earnings increase, essentially, sorry, earnings decline year over year, with the exception जब आप energy companies को निकाल दें. Obviously, अच्छा। oil stocks जो कि oil ऊपर गया है तो obviously energy stocks have actually done very well in terms of जो भी oil बेच रहा है तो वो obviously वो तो benefit ही कर रहा है उसकी earnings तो benefit ही कर रही है इस cycle से. But for other companies, they're struggling, especially retailers who are consumer discretionary. मतलब यानी अगर आप लैपटॉप्स ले लें या कुछ और चीज़ें ले लें तो वो स्ट्रगल कर रही हैं शॉर्टेजेस भी थी चिप्स की और ये सारी चीज़ें अभी भी शॉर्टेजेस की वजह से स्ट्रगल कर रही थी चाइना ने भी फर्स्ट क्वार्टर 2022 जनवरी मार्च तकरीबन लॉकडाउन लगाया हुआ था जिसकी वजह से शिपमेंट्स अगेन स्लो डाउन हो गई थी तो जनरली अच्छा। चीज़ें स्लो डाउन में लेट्स सी हाउ द अदर हाफ प्लेज सेकंड हाफ अच्छा अशर, इसमें एक सवाल है कि हमने ये देखा कि ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जाती हैं तो मार्केट काफ़ी स्लो डाउन कर जाती है, लेकिन यहाँ पर उस तरह का इफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आगे आने वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में शायद हमें नज़र आएगा, या इसकी कोई और वजह है जो आपको नज़र आए? ऑयल मतलब ऑयल मार्केट्स देखिए जब ऑयल मार्केट्स ऊपर गई हैं राइट दो दो चीज़ें होती हैं एक there are two reasons why actually the market could take this as positive and negative. तो मार्केट ने उस वक्त तक तो पॉजिटिव लिया जब तक ऑयल मार्केट्स रिकवर करे मतलब आपको याद होगा बैक इन 2020 ऑयल मार्केट्स नेगेटिव में चली गई देयर वाज नेगेटिव हुँ, में चली हुँ, गई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव में ट्रेड हो रहे थे ऑयल के हुँ। तो वो भी एक अलग पूरी सिचुएशन थी राइट फिनोमेना था यहाँ पे सॉरी सॉरी टू कट यू, लेकिन ये हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हुआ है या पहले भी ऐसा Yeah, कभी I हुआ है? think this is the first time this has actually happened, and this is all because obviously not spot market, but the futures market was actually trading at negative, हुँ, क्या कहते हैं, हुँ, negative rates. हुँ, तो the thing is the point is कि oil जब तक ऊपर जा रहा था it was a sign of recovery economic recovery right but then oil जब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया मतलब एक certain level से जैसे ना पानी मतलब सर के ऊपर से गुजर गया तो देन हुँ, फिर इन्फ्लेशन कंसर्न्स आ गई जब इन्फ्लेशन हुँ, आई ना जब इन्फ्लेशन की when people start to worry about inflation that's when people start to say कि यार we could be facing a lot of issues तो आप ये देख सकते हैं ना when oil prices started to recover back in 2020 तो सही था but then when inflation started to go beyond 5 now 8% हुँ, तो लोग परेशान होना शुरू हो गए कि भाई ये तो oil prices की वजह से तो हालत खराब हो गई अच्छा this is one of the reasons the other reason is यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जब ये आया हुँ, उसके बाद तो बिल्कुल ही मार्केट मतलब जाहिर सी बात है एक इन्फ्लेशनरी फियर में रिसेशनरी फियर में चली गई कि यार मतलब दिस मींस कि ऑयल प्राइसेस तो ऊपर ही रहने वाली काफी अर्से तक एंड एज यू नो हुँ, कि जो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी बता दिया कि भाई दे डोंट हैव इनफ स्पेयर कैपेसिटी यूएस हुँ। एक्चुअली अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स दे आर ड्राइंग डाउन ऑन देयर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स तो all of this is not good sign for the global markets which are experiencing high inflationary pressures and therefore chances of recession moving forward
तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीआई के ऊपर जाने की वजह, जो अहम वजह है वो ये है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, क्योंकि यूक्रेन रशिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं इन आइटम्स के, जो सीपीआई जिनको कैलकुलेट कर रही होती है। हाँ, अगर आप ये देखें ना कि बेसिकली ये जो मतलब 5% तक आई थी, सॉरी लेट मी जस्ट गो बैक, सॉरी ये 5% तक जो आई थी, राइट? हम्म। ये तकरीबन जुलाई या दिसंबर तक आ गई थी, राइट? बट देन फरवरी में जब कॉन्फ्लिक्ट आया है तो ये तो देख लेना छतें फाड़ दी इसने, मतलब 5 के हम्म। बाद ये 10, मतलब 9, सवा 9 एंड 8.5 पर अभी सेटल डाउन हुई है, राइट? तो हम्म। मतलब ऑफ कोर्स के यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ने इसको बहुत एलिवेट कर दिया, राइट? एंड देन दैट्स व्हेन मार्केट्स को लगने लगा कि भाई मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है कहानी, राइट? हम्म। और उस वक्त तक फेडरल रिजर्व भी कहता रहा था कि यार नहीं, ये संभल जाएगी कहानी, ये संभल जाएगी कहानी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। बट देन जब हम्म। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, फिर तो बड़ा मतलब बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। फिर अभी चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी जो निकाली एंड अपने शटडाउन शुरू कर दिए थे अर्ली स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसने भी बड़ा प्रेशर ऐड किया, क्योंकि ऑब्वियसली सप्लाई चेन में इशू आना शुरू हो गया, फिर वही गुड्स का स्लो डाउन आया एंड देयरफॉर जी। इन्फ्लेशन। तो ऑल इन ऑल या एसेंशियली पहले टू आंसर योर क्वेश्चन के पहले ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली मेड अ ह्यूज ऑब्वियसली इम्पैक्ट, क्योंकि अगेन रशिया एंड यूक्रेन supply a lot of the natural gas. Russia supplies a lot of the natural gas. Ukraine is a supplier of a lot of एक तो कुछ तो पाइपलाइंस वहीं से उसके थ्रू जाती हैं, जाहिर सी बात है, हम्म। रशिया की यूरोप। And then you have basically fertilizer products. You have other कॉर्न ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, corn oil that is coming out from Ukraine, right? तो ये यूक्रेन। सारी चीजें मतलब खास तौर पे जैसे यूरिया है, मतलब डैप है, डायमोनियम फॉस्फेट है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रशिया सप्लाई कर रहा, आई मीन यूक्रेन सप्लाई कर रहा था, जो कि अब वो ग्रेन्स हैं विच आर ग्रेन्स। एसेंशियल फूड फूड सिक्योरिटी, राइट? हम्म। इन यूरोप। तो वो सारी चीजें जब इम्पैक्ट हुई तो फिर तो मतलब लोगों की फिर हालत टाइट हुई है। ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स एक्चुअली थॉट के यार ये तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, हम्म। व्हिच इज एक्चुअली वेयर they stand right now. They're saying the Federal Reserve is a little bit too late to hike interest rates. इन्फ्लेशन अब नीचे आती है तो आती है, किसी भी तरीके से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है तो कुछ होता है, वरना तो इट्स अ बैड सिचुएशन राइट नाउ। हम्म। ठीक है अशर, तो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। ज़ाहिर है सारी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनको कम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मेजर अनाउंसमेंट्स हुई थी रिसेंटली उनको हमने कवर किया है, और मैक्रो लेवल पे हमने चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया है। पॉलिटिकल अनरेस्ट और जो भी सारी चीज़ें चल रही थी, सीपीआई फिर वहाँ पे जो अनाउंस हुआ उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस, ये सारी चीज़ें माइक्रो लेवल पे हमने कुछ चीज़ों को टच किया था, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कोशिश ये करेंगे, क्योंकि वैसे भी अर्निंग्स आने वाली हैं, तो अर्निंग्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कंपनीज़ किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे वो फंडामेंटल चीज़ें होंगी, उनके फाइनेंशियल रेशियोज होंगे, जिनको हम किसी तरह एनालाइज कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, और उसके अंदर मेरे ख्याल में जो But next week, but just to be clear, I mean, next week का game plan ये है कि markets probably risk off mode में होंगी। Markets are probably going to be looking at to be मतलब आप समझ लें एक selling mood में होंगी, आप ये समझ हुँ, लें, right? हुँ, मतलब buying mood कम होगा, risk on mode मुश्किल लग रहा है, risk off mood ज़्यादा है, प्रॉब्ली प्रेवलेंट होगा। मैंने आपको बताया ना कि नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ 414 इश, एंड ऊपर की तरफ ऑलरेडी ये तकरीबन इसने मेरी एटलीस्ट सीलिंग हिट कर दी है। तो आई एम अच्छा, प्रॉब्ली अस्यूमिंग के नेक्स्ट वीक इज गोना बी लिटिल बिट चॉपी, हुँ, flat to down probably. So anyone हुँ, who's actually trading in the market next week probably, probably trade safer and probably wait it out, I would say. हुँ, पिछले हुँ, उससे पिछले 4 हफ्ते मजेदार थे, सबने मजे हुँ, किए, पार्टी शार्टी की बहुत ज्यादा। मगर अब ये कि you'd have to probably think a little bit more, obviously, because there are two ways to look at it, right? हाँ, वो एक चीज ये अपॉर्च्युनिटी कि तो यार मतलब एक तो है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है कि यार वो मतलब अभी है ना मार्केट ने ब्रेक लिया है, ऊपर जाएगी भी यहाँ से, हुँ, राइट? और मेरा भी ख्याल है कि मुश्किल है ऊपर जाना, देयर इज नो फंडामेंटल टाइम रीजन लगेगा। कि ना ऊपर जाने में कोई एज सच कोई पुश मिलेगा। देयरफॉर आई थिंक मोस्ट लाइकली व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल बिकम रेंज बाउंड टू चॉपी,
एंड इन फैक्ट कोई खुदा वास्ता नेगेटिव न्यूज ज्यादा आ जाती है, जैसे यूरोप से इन्फ्लेशन डेटा बहुत बुरा है, या जो अगस्त के जो नंबर्स हैं वो पूरे आ जाते हैं, देन ऑब्वियसली धड़ाम कर कर नीचे की तरफ आ सकती है. हम्म, सो एनीवन हु इज ट्रेडिंग इन द मार्केट्स प्रॉब्ली बेस्ट टू बी केयरफुल नेक्स्ट वीक. हम्म। ठीक है, अच्छा, थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट, फॉर ऑल द व्यूअर्स। आपको अगर कोई भी सवाल हो, कोई किसी किस्म की कोई चीज़, कोई डाउट, कोई समझ में ना आया हो, कोई टर्मिनोलॉजी हमने इस रिकैप के अंदर कोई ऐसी यूज़ की हो जो जिसकी आपको समझ में ना आई हो, वैसे तो हर चीज़ यूट्यूब और गूगल के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन आप स्पेसिफिकली S&P रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी इस तरह का सवाल हो, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकैप के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।